Everyone, I am Rajan from Teacher Circle and today we are going to discuss what is refraction. Okay, मेरा पहला वीडियो जो था वो हमारा रिफ्लेक्शन के ऊपर में था। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विथ रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इफ यू वांट टू सी रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग रिफ्रैक्शन को देखते हैं और आसपास आप कहीं भी देखो आपको रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। तो पहले पता कर लेते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। इट इज बेसिकली द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स मीडियम। नाउ व्हाट इज चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स मीडियम? दिस इज द डेफिनेशन यू कैन से ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब क्या हो रहा है, आपका लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो देयर इज चेंज ऑफ वेलोसिटी। दैट मीन्स आपका लाइट का रेयर मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है? वी ऑल नो दैट इज योर स्पीड ऑफ लाइट। दैट मीन्स v इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम। दैट मीन्स कोई भी मीडियम हो, लेट इट बी अ ग्लास मीडियम, लेट इट बी अ लिक्विड मीडियम, लेट इट बी एनीथिंग, तो हर एक मीडियम का अपना अपना डेंसिटी होता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन इन द लाइट। प्रिंसिपल क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल, लाइट ट्रेवल्स एट फास्टर इन रेयर मीडियम एंड स्लोअर इन डेंसर मीडियम। ऑब्वियसली लाइट विल ट्रैवल फास्टर इन रेयर मीडियम। ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है आपका 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसमें आपका जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द लाइट, जिसके वजह से हमको ये रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक एग्जांपल देता हूं रिफ्रैक्शन का। आप एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास में पेन को डीप कीजिए। आई एम शोइंग द डायग्राम ओवर हियर। एक ग्लास लिया आपने, इसमें आपने वाटर भर दिया, राइट? नाउ यू डिप अ पेंसिल ओवर हियर। व्हेन यू विल सी, आप जब पेंसिल को ऊपर से देखेंगे, यू विल सी द पेंसिल इज नॉट स्ट्रेट। दैट मीन्स पेंसिल थोड़ा सा बेंड होके इस तरफ दिख रहा है। दिस इज बिकॉज हम जब ऊपर से देख रहे हैं, दैट मीन्स रे ऑफ इंसिडेंट जो हमारा जा रहा है एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स आप जब रेयर से डेंसर की तरफ देखेंगे तो वहां पे लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो ये व्यू में चेंज आ रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल जो आज मतलब आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं एक्टिविटीज के रूप में। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। और आप ये एक्सपेरिमेंट को खुद घर में आप यूज करके देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। सॉरी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, वी डिस्कस्ड the principle. Now we are going to see what are the important things we should note in this part. When light travels from rarer to denser medium, light moves towards normal. That means light अगर आपका rarer से denser की तरफ जा रहा है, let's suppose this is the medium, this is your rarer medium, this is your denser medium, and let's suppose this is the normal. Now when the light moves फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट मूव्स टूवर्ड्स नॉर्मल। जब आपका रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगा। व्हेन इट इज गोइंग डेंसर टू रेयर मीडियम, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज फॉर द फर्स्ट वन एंड दिस इज फॉर द सेकेंड वन। डोंट कंफ्यूज। Ray emerging after the medium goes into the same direction and parallel to the incident ray. That means the ray which are emerging after denser medium के बाद जो ray emerge होते हैं, they always go in the same direction and they are always parallel to the incident ray. So these are the three most important things you should note before going to the glass slab डायग्राम और वॉट एवर यू कैन से। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लास स्लैब डायग्राम देखेंगे, उस डायग्राम से हम लोग क्लियर करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग करेंगे। बिफोर दैट आप ये तीनों को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मैं और एक बार रिपीट करता हूं, लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो लाइट
इंसिडेंट रे जो है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होता है। जब आपका डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाता है तब आपका जो लाइट है वो नॉर्मल के दूर चला जाता है। द लास्ट पॉइंट, रे इमर्जिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम। मान लो अगर यहां से आपका रे इमर्ज हो रहा है डेंसर मीडियम से, तो वो हमेशा वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएगा और हमेशा इंसिडेंट रे के पैरेलली रहेगा। पैरेलली मींस लेट्स सपोज ये आपका इंसिडेंट रे यहां डेंसर से उठा, लेट्स सपोज दिस इज डेंसर और ये आपका इंसिडेंट रे इसके पैरेलल में आपका जाएगा, राइट। ये और अच्छे से समझ सकेंगे जब हम लोग ग्लास लैब वाला एग्जांपल देखेंगे, जो एक्टिविटी बेसिक आपके टेक्स्ट बुक में दिया रहता है। We can understand more clearly by this diagram, that is your refraction through a glass slab. Let's suppose this is your glass slab, this is your air medium and this is again your air medium. Let's suppose आपका यहां से ray of incident आया, पहला नॉर्मल को टच किया, then bending towards normal in the glass slab, यहां से आपका ये speed of light इसका चेंज हुआ as because एयर मीडियम से ग्लास मीडियम जो होता है इट इज डेंसर मीडियम। ओके, तो ये रेयरर से जब डेंसर मीडियम में गया तब देखिए यहां पे ये टूवर्ड्स नॉर्मल थोड़ा मूव हुआ। अगेन व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दैट मीन्स ये आपका जो होगा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बोथ विल बी पैरेलल एज वी हैव सीन इन आवर लास्ट पार्ट। हमने क्या बताया था, जब आपका कोई भी इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू रे ऑफ इंसिडेंस। नाउ कमिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको ये जानना बहुत जरूरी भी है। सी व्हाट इट इज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन एनी ट्रांसपेरेंट मीडिया लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड जो है दैट इज योर रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन आई टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन आर, वेयर आई एंड आर आर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू m, which is a constant. This law can be also stated as Snell's law. Now coming to the third portion, that is your refractive index. Refractive index is nothing. We can say it is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, or you can say it is the speed of light, that means v1 by v2, that is the refractive index. Now for solving the problems of refractive index we should know the refractive indexes of different media. आपको different medias के refractive indexes पता होना चाहिए, like for example glass, air you know, and rest other things, let it be any liquid, let it be any medium, उन सबके refractive indexes आपको sums में दिए रहेंगे. Using those values you have to find out the refractive index of any surface, any medium. You can say n/1 का मतलब क्या हो रहा है, medium 2 to medium 1, that is speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2, that we can also denote by velocity of light in medium 1 and velocity of light in medium 2. Understand this refractive index by taking an example. Refractive index of a glass is given as, refractive index we can denote by mu g. refractive index of glass मैंने यहाँ पे g लिखा है क्योंकि ये glass का refractive index है, and that is your 1.5. velocity of light in vacuum, that is we are very obvious, हमको पता है ये velocity of light को हमने vc लिखा, that is your 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now you will have to find out the velocity of light in vacuum, that means velocity of light you will have to find out in medium, that means Vm आपको निकालना है. Now what we have seen in our last part, क्या होता है आपका refractive index is velocity of medium 1 to the respect of velocity of medium 2, that means Vc by Vm. Now refractive index is given as 1.5, we are putting 1.5 and Vc is your 3 into 10 to the power 8 meter per second by Vm. You need to find out Vm. How you will find out Vm? So Vm is equal to, directly we can say, we can shift this 3 into 10 to the power 8 by 1.5. That means you are getting velocity of light in medium as 2 into 10 to the power 8 meter पर सेकेंड. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं
ऑप्टिक्स के इस पार्ट में वेर यू हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेर यू विल बी गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम. Second problem, if refractive index of water is 4/3, that means mu w I have written for refractive index of water, that is given as 4/3, and refractive index of glass is given as 3/2. Refractive index of glass is given by 3/2. You will have to find out the refractive index of glass with respect to water. That means you will have to find out the refractive index of glass with respect to water. That means it is very simple. Glass with respect to water. That means you will be having 3/2 by 4/3. That means refractive index of glass with respect to water. You will simply solve it. This will be your 9/8. This is the refractive index you have got. बहुत ही सिंपल है. इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम एक कराऊंगा जो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जिसमें हमने ये जानना है कि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ होता क्या है. बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल डेप्थ एंड व्हाट इज अपरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ वो होता है जो एक्चुअली रियल होता है. लेट्स सपोज मैंने वो एग्जांपल दिया था, एक ग्लास के अंदर अगर आप एक पेंसिल डिप करेंगे तो व्हाट यू विल सी, पेंसिल एक्चुअली ऐसे था, बट आप जब ऊपर से देखेंगे इट विल बी स्लाइटली बेंड. और ये होता क्यों है, ये आपका जो ऊपर से देख रहे हैं दैट इज the thing you are seeing apparent depth. That means if the water level, glass का जो ये mark है, if it is here originally, it will be looking like it is here. This is your real depth and this is your apparent depth. इसको और clear समझेंगे when you will so we will be solving this problem. Then we can understand this. So let's see what the problem is. An object at the bottom of the beaker filled with a liquid up to height 10 centimeter, and if the refractive index of liquid is with respect to water, that means refractive index of liquid with respect to water is given as 4/3. You will have to find out, and real depth is given as your 10 centimeter. You will have to find out the apparent depth. अपरेंट डेप्थ आपको निकालना है. तो बहुत ही सिंपल है. आपका क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, a mu g is given. You will simply do real depth by apparent depth. Real depth by, I am denoting depth by d here, by apparent depth. That means what was your real depth? a mu g आपको पता है 4/3. Real depth is 10 centimeter. Apparent depth क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है. यू सी 4a is equal to this will be your 30 और apparent depth will be your 30/4, that is equal to 7.5 centimeter. So apparent depth आपका कितना है, 7.5 centimeter. See clearly here हमारा प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था, आपका रियल डेप्थ दिया हुआ था, that was your 10 centimeter, and a mu g, that means refractive index of air with respect to glass was given as 4/3. So आपको क्या करना था, apparent depth निकालना था. मैंने एक्सप्लेन कर दिया apparent depth और real depth. आप इसको और इजीली समझ सकते हैं. We can also write a mu g is equal to real depth by apparent depth. By this formula we can solve this problem. बहुत ही सिंपल है. Always remember apparent depth और real depth का जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमेशा याद रखना, अगर refractive index is given, so you will have to follow this formula, real depth by apparent depth. By doing this you can also find out real depth as well as apparent depth, and if the refractive index is not given you can also find out the refractive index. ये हमारा रिफ्रैक्शन, आज का जो क्लास था रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर पे था. हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन को समझा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझा, और हमने क्या समझा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड प्लीज फॉर गेटिंग नोटिफिकेशंस व्हाट इज आवर कमिंग वीडियो प्लीज हिट द बेल आइकन. एंड हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आपका स्फेरिकल लेंसेज के ऊपर में. थैंक यू.